My channel. Today I received Lenovo Legion with no power. When I connect power supply, it's showing 0.12 ampere but not glowing any light, no sign of life. I repair many laptop with this issue. As you can see, I repair many laptop with this same issue. Both are Lenovo Legion. I show you how I solve this kind of problem. First, we need to check main power. DC jack input 19 volt. First MOSFET, DC jack fuse 19 volt, output 19 volt. First MOSFET 19 volt, output 19 volt. Second MOSFET, output 19 volt. Current sensing resistor 19 volt. 3.3 volt regulator IC 19 volt. Three point three and 5 volt not present. Three point three volt regulator IC resistor 4.6 volt. Second resistor 4.7 volt. 3.3 volt IC is getting hot. I show you. It's consuming 0.16 ampere. As you can see, the 3.3 volt regulator IC is
getting very hot. I'm going to replace the IO chip controller, Super IO controller. I have replacement of that IO chip. If you pull IO chip, the help of IC button, IC button pull, that pull, it will very easy to line. Yeah. If you pull IO chip from that pickup pull, it will very easy to align the IO chip. For installing the new IO chip, it's very easy to align the chip. It's a IT8226E192 IO chip. It does not need programming. It will be program itself at the first boot and automatically take data from BIOS EEPROM IC.
As you can see the display, the job is done. The problem arises due to this charger. Is repaired charger, as you can see. Always use original charger. Now in हिंदी, मेरे पास ये लीजन आया था रिपेयरिंग के लिए। मेरे पास काफ़ी लीजन है जो मैं ये रिपेयर करता रहता हूँ। गेमिंग लैपटॉप मेरे पास काफ़ी आते हैं, तो मुझे आइडिया था इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो इसमें प्रॉब्लम थी कि उसने ना ये चार्जर, जब मैंने से पूछा आपने चार्जर को नहीं चेंज किया, तो वो उसने ना ये चार्जर जो है ना ये रिपेयर करवाया था किसी से। तो मेरा ख्याल से उसने इसकी जो 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 ये दरमियान वाली वायर होती है ना, दरमियान वाली पिन, यहाँ पे रजिस्टर होती है, इसके अंदर ना रजिस्टर होती है। जैसे एचपी की वायर में दरमियान वाली पिन में 5 वोल्ट होते हैं, 3.3 वोल्ट होते हैं, और डेल में आईडी होता है। यहाँ पे दरमियान वाली जो वायर है, पिन है, उसमें आईडी होता है। ऐसे ही जो ये लीजन के चार्जर हैं लेनोवो के, इनमें दरमियान में रजिस्टर लगी होती है, जिससे वाटेज का टाइप का पता चलता है कि कितने वाट का चार्जर है। अब ये देखें मेरे यहाँ पे ये पूरे एम्पेयर नहीं ले रहा, इसको लग रहा है कि ये कम एम्पेयर का चार्जर लगा हुआ है, क्योंकि ये मेरी जो केबल है इसके अंदर सिर्फ 90 वाट की चार्जिंग है। 90 वाट की जो रजिस्टर है वो लगी हुई है, जो 90 वाट प्रेजेंट करती है कि ये 90 वाट का चार्जर लगा हुआ है। तो उसने ये कहीं से रिपेयर करवाया है, और उसने ये इसकी जो अंदर वाली जो वायर्स है वो 19 वोल्ट से मिक्स कर दी है। इस वजह से ये इसकी सारी जो इसके आगे आयो चिप जो लगी हुई थी वो ख़राब हो गई, क्योंकि इसमें एक डायोड लगी होती है इसके चार्जिंग पॉइंट में। ये दरमियान वाले पॉइंट में एक डायोड लगी हुई है, और साथ ही फिर आयो चिप कनेक्ट है उसके। तो जब आप इस पर ये गलत चार्जर लगाते हो, अगर उसके दरमियान वाली पिन में कोई वोल्टेज चला जाए तो वो आयो चिप ख़राब हो जाती है, तो फिर हमें आयो चिप चेंज करनी पड़ती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लैपटॉपों में ये प्रॉब्लम आती है। जैसे ये वाला लैपटॉप है, इसके अंदर इसका पीसीएच का फॉल्ट है, इसका पीसीएच ख़राब है। इस वाले में भी सेम आयो चिप का फॉल्ट है, चार्जर की वजह से जो आया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।